हम चले या न चले, हम करे या न करे, देश चल पड़ा है। With that, Narendra Modi set off on an incredible journey. His high-voltage campaign was like no other, rewriting the rules of political engagement. It has been a while since we saw a prime ministerial candidate or a leading political personality get onto Amethi and make the kind of statements which have been made by Mr. Modi. Modi came with the promise of a new India, an India of the future. मैं 5T की बात करता हूं। टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये 5T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं मित्रों। BJP made history, becoming the first party to win a majority on its own since 1984. With tremendous dynamism, a real doer who's put our country on the map, and man with unquestionable integrity has given hope to our people, and he was a popular choice. With Modi at the helm, the government set out to define Brand India. Narendra Modi is now all set to launch his Make in India campaign in the capital today. Picking up that broom himself and starting that Swachh Bharat Abhiyan. He redefined India's place on the global stage, giving international relations the personal touch with his trademark hug diplomacy and winning over global audiences. I believe that we can speak with one voice for one future. That is why I'm here, because believe in you. Believe in you. May the force be with you. He set a strong precedent with the surgical strikes, signaling that India would aggressively respond to provocation. हमारी सेना की ताकत देखिए, 250 किलोमीटर लंबे पथ पे जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। Then came the war on black money, with the announcement on demonetization. आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी. His impressive oratory skills both attacked and defended with equal sharpness. बीसी की व्याख्या उनकी है बिफोर कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था इस देश में, था तबाह था, गर्त में था. और एडी का मतलब है आफ्टर डायनेस्टी. He was quick to turn around even the most surprising political moves. पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है. ये पहली बार पता चला मुझे. पहली बार मैं देख रहा हूं कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती हैं. Once again in 2019, he reaffirmed his no-tolerance policy on acts of terror. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा. मैं देश नहीं रुकने दूंगा. मैं देश नहीं झुकने दूंगा. मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा. With his impressive social media reach,
Modi's global popularity continues to grow. The much anticipated Howdy Modi event in Houston is the first on Prime Minister Modi's itinerary. That's where he'll be addressing a record audience of 50,000 people. The United States and India will make our nation stronger, our people wealthier, our dreamers bigger, and our future brighter than ever before. In 2019, he proved that the Modi wave had turned into a Modi tsunami with a massive win. When it came to cross-border skirmishes, he remained resolute. भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है. Under his leadership, he fulfilled the long-standing promise of the BJP for a Ram temple in Ayodhya. जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं. Modi has pitched India as a global investment destination and a manufacturing hub of the future, while also preserving and promoting India's ancient culture. As he turns 70, the man on a mission shows no signs of slowing down.